वीज़ा एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, वीज़ा एक्सेप्टेंस आएगा, नहीं आएगा, वीज़ा एक्सेप्टेंस आएगा, नहीं आएगा। The average wait time of an F1 student visa lies somewhere around 60 to 100 days, while if you are going for a B1 and a B2 visa, that goes up to 500 to 1000 days. कुछ केसेस में हमने ऐसा भी देखा है कि स्टूडेंट्स को इमीडिएटली पता लग गया है कि they got rejected or accepted. In any case, international students should not underestimate the US visa interview for its short duration. Hello everyone and welcome back to College Dunya Study Abroad. My name is Swapnil and today we are discussing about the US visa interviews and some commonly made mistakes जो आप avoid कर सकते हो while you are going for the interview. This video is divided into two major parts. पहला पार्ट वो होगा जहाँ पे हम उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो एक US इंटरव्यू डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है एंड द सेकंड पार्ट वुड बी द मिस्टेक्स जो आप अवॉइड कर सकते हो एंड उनको कैसे अवॉइड करना है while you are preparing for your US वीजा इंटरव्यू. बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो एंड तक जरूर देखना, अगर पसंद आए तो लाइक करना एंड हिट दैट बेल आइकन एज वेल. यू विल गेट रेगुलर स्टडी अब्रॉड वीडियो अपडेट्स. इफ यू आर आल्सो थिंकिंग अबाउट परस्यूइंग योर स्टडीज अब्रॉड then डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, just go on that link, fill in your basic details and our expert counselors will reach out to you in just 24 hours. Now let's move ahead in our video. US visa interview is very sensitive and there is a high chance कि आपको reject face करना पड़ेगा because of the smaller things like you not being confident enough in your answers or having an unclear background in your passport photograph. The other day I was talking to an international student and she told me that not having a last name caused major troubles for her in the whole visa process. ऐसे ही बहुत सारे reasons हैं जो influence करते हैं आपके US visa interview decision को. So now let's talk about the major factors that might get your US visa rejected. Factor number 1, the university and the course. इंटरव्यूअर को आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स, आपकी यूनिवर्सिटी का वीजा सक्सेस रेट एंड आपके कोर्स की फीस तक भी पता होगी. ये सभी फैक्टर्स बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरव्यूअर के माइंड को व्हाइल ही और शी इज डिसाइडिंग अबाउट योर फ्यूचर इन द यूएस. सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट चूजिंग एनी यूनिवर्सिटी जिसकी रैंकिंग बहुत ज्यादा कम है या आपका कोर्स भी बहुत रैंडम नहीं होना चाहिए. इवन इफ यू आर चूजिंग अ नीश कोर्स देन यू शुड हैव अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड द राइट जस्टिफिकेशन कि वो आपके करियर के साथ कैसे अलाइन करता है. फैक्टर नंबर 2, योर फंड्स. ऑफ कोर्स द मनी मैटर्स. इंटरव्यूअर को ये जानना है कि आपके बैंक अकाउंट में कितने फंड्स हैं, क्या आप अपनी ट्यूशन फी पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या अपने बेसिक डे टू डे एक्सपेंसेस आप मीट कर पाओगे या नहीं यूएस में. इसलिए फंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा एकदम भी मत करना कि आपने बस 1-2 महीने पहले ही सारे फंड्स ट्रांसफर करे हो अपने बैंक अकाउंट में एंड आपने इंटरव्यूअर को वो दिखा दिया. नहीं, टाइमलाइन भी मैटर करती है. द फंड्स शुड बी देयर सिंस द पास्ट 4-5 मंथ्स. फैक्टर नंबर 3, योर फैमिली एंड रिलेटिव्स इन द यूएस. अगर आप इंटरव्यूअर को ये बता रहे हो कि आपकी फैमिली ऑलरेडी यूएस में प्रेजेंट है या आपके बहुत सारे रिश्तेदार भी यूएस में हैं एंड यू हैव एक्चुअल प्लान्स ऑफ मीटिंग देम, तो इंटरव्यूअर को यही लगेगा कि यू आर गोना सेटल इन द यूएस एज वेल. दैट इज अ मेजर रेड फ्लैग फॉर द इंटरव्यूअर एंड ही और शी कैन इजीली डिसाइड कि नहीं, आपको नहीं जाना है. फैक्टर नंबर 4, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन एंड कोर्स सिलेक्शन. आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज करी एंड आपको यही कोर्स क्यों परस्यू करना है. द इंटरव्यूअर इज वेरी कीन टू अंडरस्टैंड योर थॉट प्रोसेस. सो मेक श्योर करना कि आप रैंडम चीजें ना बोल रहे हो कि ओ दिस यूनिवर्सिटी इज सो गुड, मेरे को तो बचपन से सपना था यहाँ पे पढ़ने का. नहीं, ऐसी चीजें नहीं बोलनी है. फैक्टर नंबर 5, द कोर्स इज नॉट मैचिंग योर प्रोफाइल. लेट्स से आपने अपनी बैचलर्स परस्यू करी है इन मास मीडिया एंड आप मास्टर्स परस्यू करना चाहते हो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में. टू वेरी डिफरेंट फील्ड्स, नॉट एट ऑल रिलेटिंग. दिस इज ऑल्सो रेड फ्लैग फॉर द इंटरव्यूअर. फैक्टर नंबर 6, इनएडिक्वेट आर्टिकुलेशन. सिंपल सी बात है, अगर आप इंटरव्यूअर को बता ही नहीं पा रहे हो या ढंग से समझा ही नहीं पा रहे हो कि आपको यही यूनिवर्सिटी क्यों अटेंड करनी है, दैट बिकम्स अ वेरी मेजर रेड फ्लैग फॉर द इंटरव्यूअर. चलो, ये तो वो सारे मेजर फैक्टर्स हो गए जो कि आपके यूएस वीजा डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट यू कैन डू इन ऑर्डर टू पास ऑल दीज हर्डल्स. बिफोर वी स्टार्ट टेलिंग यू अबाउट द राइट आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस दैट यू माइट एक्सपेक्ट इन अ यूएस वीजा इंटरव्यू, एक सिंपल सी बात इंटरव्यू के बारे में समझो. सी, you have to be very confident with your answers. You should have proper and precise answers. Do not exaggerate or do not lie about your academic profile or about your funds as well. Show very clear intentions of returning back to your home country during the whole interview. And at the end, just remain calm, focused and truthful about whatever you are telling to the interviewer. Now, let's talk about the mistakes and आप इन mistakes को कैसे omit कर सकते हैं. Talking about your university and course. Do a thorough research upon the university ranking
एंड उस यूनिवर्सिटी का वीजा एक्सेप्टेंस रेट। अगर आपकी यूनिवर्सिटी एक बहुत ही लो रैंक यूनिवर्सिटी है तो ऑफ कोर्स उसके वीजा रेट बहुत अच्छे नहीं होंगे। सो अवॉइड चूजिंग सच यूनिवर्सिटीज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक थरो रिसर्च करें अबाउट सच बेसिक डिटेल ऑफ योर यूनिवर्सिटी। यू शुड हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फंड्स जो कि ये इंडिकेट करे कि ठीक है आप अपनी लाइफ यूएस में बहुत ही आराम से स्पेंड कर लो, एंड ये पैसे एटलीस्ट पिछले 6 महीने या 7 महीने से अपने बैंक अकाउंट के रिकॉर्ड में रखो। डोंट डू कि ठीक है इधर से पैसा ले लिया उधर से पैसा ले लिया एंड 1-2 महीने में सारा पैसा फिक्स कर दिया अपने अकाउंट में। दिस वुड बी अ रेड फ्लैग टू द इंटरव्यूअर। नाउ coming to your relatives in the US. In the interviewer often asks, tell us about your relatives and how did they come to the US. Let's say you have a sibling and that sibling stayed back after the work program. Now this whole situation would not look good for you. Let's take another example. If you have a sibling जो already as a student US में है, there is a high chance कि interviewer उस sibling को enough consider करेगा for them to be in the US. They would not want कि ठीक है कोई दूसरा या तीसरा इंसान भी US में आए आपकी फैमिली से। Now, what you have to do is you do not have to show very strong ties with your family or relatives that are there in the US. Tell them that you haven't contacted your relatives since a long time now. Questions like what is the current visa status of your relatives? इसका आपको बहुत सिंपल सा आंसर देना है कि I'm not well aware about their visa status because I've only met them once or twice in my whole life. So keep everything very clear cut and do not show strong ties with your relatives. The next is questionable source of funds. तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए कि तुम्हारी स्टडीज कैसे स्पॉन्सर हो रही हैं। Let's say you have a scholarship, तो mention कि आपने स्कॉलरशिप ले रखी है। Have the documents ready for your scholarship as well. If you have someone else who is sponsoring your studies, then you should know about their source of income. Go through your sponsors, ITR documents and other supporting documents as well. आपकी स्टडीज का पैसा कहाँ से आ रहा है? Interviewer will be very interested to know about this. So make sure you know everything about the money and the source where it is coming from. The next is your university selection and the course selection. You have to be very mindful about the university that you are choosing. Low ranking universities are a red flag. Very niche and random courses are a red flag. Courses जिनका आप justification ना दे पाओ कि how is it aligning with your career are major red flags. So be very mindful about आप क्या choose कर रहे हो। University selection and course selection में articulation is the key. You have to make the interviewer understand that this course is the most important thing that you are going to do in your career. Why do you want to do it from US? Why do you want to do it from this XYZ university? You have to have very proper answers to the same. Let's say you're going to pursue your masters in a research course in the US. And interviewer आपसे पूछता है कि आपको ये particular course इस university से ही क्यों करना है? Your answer should be something like that you have found a faculty जिनका research work is on the same lines that you want to pursue a career on, which is why it makes clear sense कि आपको इसी यूनिवर्सिटी से ये कोर्स परस्यू करना है। डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक पर क्लिक करो, you will get to see a long list of questions जो इंटरव्यूज में काफी दफे पूछा आता है एंड उनका क्या आंसर देना है वो भी उसी डॉक्यूमेंट में आपको मिल जाएगा। So this was everything about the US visa interview and the mistakes जो international students कर जाते हैं while they are giving their interviews. I hope ये वीडियो आपके लिए valuable रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो hit the like button, subscribe to our channel as well, and do not forget to check the second link in our description. Comment section में बताओ what more questions do you have about the US visa interview process. I will be replying to all your questions and tell me more कि आप US visa interview के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। We'll see you in the next video. Till then, this is Swapnil signing off. Bye.